Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. Dear students, in last class we have already completed chapter number 12. In this class we are going to start chapter number 13, that is adventure time. So let's start our today's EVS class. Students, let's start our today's EVS class, and in this class we are going to start chapter number 13, that is adventure time. स्टूडेंट्स, एडवेंचर का मतलब होता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो बहुत ही एक्साइटिंग हो, जिसमें हमें बहुत ही मज़ा आता है, एंड दे आर डेंजरस ऑल्सो। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मज़ा तो आता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ही थ्रिलिंग होती हैं, बहुत ही डेंजरस यानी ख़तरनाक होती हैं। So adventure means an unusual and exciting or daring experience. यानी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में हमें हिम्मत के साथ काम करना पड़ता है। So adventure is an unusual, exciting or dangerous experience, journey or series of events. A person who undertakes an adventurous trip and enjoys the adventure is called an adventurer. यानी वो लोग जो ये एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस गेन करते हैं उनको हम एडवेंचरर कहते हैं। यानी वो सारे लोग जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हम एडवेंचरर कहते हैं। नाउ वी हैव अ नंबर ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज़. So activities such as rafting, paragliding, trekking, mountaineering, rock climbing, etc. are known as adventurous activities. So students, let's see the picture of one by one. This is rafting. So rafting में क्या होता है? rafting में rafts होते हैं. अब ये raft का पिक्चर आप देख सकते हैं, वाटर में लोग राफ्ट के ऊपर बैठे होते हैं। तो राफ्ट जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस या फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लास्टिक या रबर के बने होते हैं, और लोग इस राफ्ट में बैठ करके वाटर में इंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स, राफ्टिंग वाटर में होती है। नेक्स्ट वी हैव पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग में आप देख सकते हैं ग्लाइडर्स के पिक्चर, ये जो रेड और येलो में है इन्हें हम ग्लाइडर्स कहते हैं, और ये ग्लाइडर्स पर्सन की बॉडी से अटैच होते हैं। तो रोप्स के थ्रू या वायर्स के थ्रू ये पर्सन की बॉडी में अटैच होते हैं, और फिर लोग एयर में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं और फिर जंप करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग का मतलब होता है वॉक करना, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। सो ये ट्रैकिंग कैसी होती है? तो मतलब जब लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं या पहाड़ों के आसपास के एरिया में जब लोग चढ़ते हैं तो उसी को हम ट्रैकिंग कहते हैं। या लोग जब पहाड़ों के ऊपर भी जब लोग चढ़ते हैं तो उसी को हम ट्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव माउंटेनियरिंग। तो इट्स वेरी सिंपल। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट वी हैव रॉक क्लाइंबिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है रॉक्स के ऊपर चढ़ना या रॉक्स के ऊपर क्लाइंबिंग करना। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज एक्टिविटीज़ दैट जो अभी आपने देखा, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग या रॉक क्लाइंबिंग, these all activities are full of adventure and these activities are thrilling also. So students, let's talk about mountain climbing. Mountaineering or mountain climbing is an exciting adventurous sport of climbing mountains. तो मतलब ये हुआ कि जब हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं तो उसी को हम माउंटेन क्लाइंबिंग कहते हैं। अब माउंटेन्स क्या होते हैं तो आपको पता ही है कि हमारे अर्थ पे जो ऊंचे ऊंचे लैंडफॉर्म्स हैं जो समुद्र से बहुत ही ऊंचाई के लेवल पे हैं, उन्हीं को हम माउंटेन्स कहते हैं। माउंटेनियरिंग मेक अ पर्सन रफ एंड टफ. इट मीन्स दैट इट मेक्स अ पर्सन बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. So, a person who climbs mountain is called a mountaineer. यानी जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माउंटेनियर कहते हैं। Climbing mountain peak requires intense training, patience, strong mental and physical ability. तो स्टूडेंट्स, जो लोग पीक्स यानी जो माउंटेन की चोटी होती है उसी को हम पीक कहते हैं। तो माउंटेन्स के पीक पे जो लोग चढ़ते हैं उन्हें
कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। वो लोग बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। उनके अंदर पेशेंस यानी धैर्य होना चाहिए और वो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग भी होने चाहिए। So students, let's talk about training for mountain climbing. So mountain climbing can be dangerous if the mountaineers are not trained and prepared properly for it. तो जो लोग माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग करते हैं उन्हें बहुत ही प्रैक्टिस, बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो जब माउंटेनियर्स पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको पता ही है पहाड़ जो होते हैं वो समुद्र लेवल से बहुत ही ऊंचे होते हैं, यानी सी लेवल से जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं, यानी ऊंचे होते हैं। तो ऊंचाई पे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होता जाता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस एट हायर एल्टीट्यूड्स। Thus mountaineers find it difficult to breathe as they climb up. तो जो माउंटेनियर्स होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊंचाई पे हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। Also, the low temperature at high altitudes makes climbing even more difficult. Therefore, it is very important to undergo training before going for mountaineering. तो स्टूडेंट्स अब हाई एल्टीट्यूड्स पे जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। जो पीक्स होते हैं यानी जो चोटी होती है माउंटेन्स की वो आइस से कवर होती है, तो इसलिए माउंटेनियर्स को ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इन सब कंडीशंस को फेस करने के लिए जो माउंटेनियर्स होते हैं उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना होता है ताकि जब वो माउंटेन्स पे चढ़ें तो हर एक प्रॉब्लम को फेस कर सकें। द टू फेमस इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच प्रोवाइड ट्रेनिंग टू माउंटेनियर्स आर, फर्स्ट वी हैव नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी एंड सेकेंड वी हैव हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग। So students, let's see the picture. Before one goes for mountaineering, one has to undergo lot of physical training for attaining the physical fitness. So students, let's talk about rough and tough mountaineers. Mount Everest is the Earth's highest mountain peak. So students, it means that Mount Everest, the world's highest peak, is in Nepal and its height is 8,848 meters above the sea level. The first mountaineers to climb the highest peak of Mount Everest were Tenzing Norgay of Nepal and Edmund Hillary of New Zealand in 1953. When they climbed Mount Everest, they hoisted the national flag of their countries on the top. So really it is great pride for their countries. तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ बछेंद्री पाल। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज बछेंद्री पाल। सो रियली स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी ग्रेट फॉर अस, इट इज़ अ ग्रेट प्राइड फॉर अस। तो हमारे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है। She did her training from the Nehru Institute of Mountaineering. After completing her studies, she reached Mount Everest on 23 May 1984 and hoisted the national flag of India on reaching the peak. She also led an all-woman team to Everest. In 1994, she led an all-woman rafting team down the Ganga. Students, during her mountaineering career, Bachindri Pal had bagged several awards and recognitions. Some of them are Padma Shri in 1984, Arjuna Award in 1986, National Adventure Award in 1994. So all these are achievement of Bachindri Pal. Students, let's talk about space. Whenever we look up in the sky, we are actually looking into the outer space. The objects that exist in the outer space are known as heavenly bodies. तो students, जब भी हम
आकाश की तरफ देखते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो अगर हम सनी डे की बात करें, सो वी कैन सी द सन एंड ब्राइट ब्लू स्काई. In the evening, just before the sunset, sky turns red, pink, and orange. Sometimes we also see the moon during daytime, but it is visible only in the morning or at dusk when the sunlight is not as bright as during the day. तो हम आउटर स्पेस की जो बात कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारा आउटर स्पेस शुरू हो जाता है एंड द ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन द आउटर स्पेस आर नोन एज हेवनली बॉडीज. सो लेट्स टॉक अबाउट हेवनली बॉडीज. द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, meteors and comets. All these are heavenly bodies. Students, this is the picture of our Earth. It is also called the blue planet because it looks blue from space. This is due to abundance of water on the Earth. During the daytime, the sun gives out light to the Earth. Due to the sunlight, we are not able to see the stars and moon in the sky. This can be seen at night when there is no sunlight. तो हाँ, ये हमारा अर्थ है और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि अर्थ को जब स्पेस से देखा गया तो अर्थ ब्लू दिखा. क्यों दिखा? क्योंकि हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर. तो सबसे ज़्यादा वाटर है, इसलिए हमारा अर्थ स्पेस से ब्लू दिखाई पड़ता है. Okay students, so apart from heavenly bodies, there are certain objects that are sent into space by humans. यानी कि heavenly bodies के अलावा हमारे स्पेस में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा भेजी जाती हैं. अब वो चीज़ें क्या हैं? सो दैट इंक्लूड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और यू कैन से मैन मेड सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट. तो यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या जिन्हें हम मैन मेड सैटेलाइट्स भी कहते हैं, तो मैन मेड सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट. सो दीज आर two things which sent by human beings in space. Artificial satellites are launched into space with the help of a rocket. तो artificial satellites को human being rockets के थ्रू स्पेस में लॉन्च करते हैं. अब सैटेलाइट है क्या? तो a satellite is an object in a space that orbits or circles around a bigger object. So students, what is a need of satellite? That is also very important. So let's know about this. So students, let's talk about importance of satellites. There are thousands of satellites in orbit and they look like moving stars or aeroplanes. These satellites and space stations are equipped to collect important information on space, planets, stars and weather condition on Earth. So students, in 1957, the USSR, now Russia, sent the artificial satellite named Sputnik 1 to space. So this is the picture of Sputnik 1 and this is the artificial satellite sent by Russia. Students, this is the picture of satellite Aryabhatta. India sent its first artificial satellite named Aryabhatta to space in 1975. So this is India's first satellite launched. So students, let's talk about spacecraft. This is a picture of spacecraft. अब spacecraft एक तरह का व्हीकल है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है? स्पेस है. यानी कि स्पेस में जाने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत होती है. So, spacecraft is a vehicle which is designed to go out of the Earth's atmosphere and travel through space is called a spacecraft. An astronaut is a person who commands, pilots or serves as a crew member of a spacecraft. Crew member means all the people who work on an aircraft.
Students, one thing about spacecraft is also very important, that the spacecraft could be a manned one or an unmanned one. So what is the meaning of manned spacecraft? So manned spacecraft means a spacecraft that can transport human beings outside the Earth's atmosphere. Now, what is the meaning of unmanned spacecraft? So unmanned spacecraft means spacecraft which travel without human being. Students, this is the picture of Yuri Gagarin. The first person to travel in space was Yuri Gagarin. He traveled in a spacecraft named Vostok 1 on 12 April 1961. Students, this is the picture of Valentina Tereshkova. The first woman to travel into space was Valentina Tereshkova in 1963 aboard Vostok 6. Students, this is the picture of Commander Neil Armstrong. Neil Armstrong on 20th July 1969 became the first human to step on the moon. He put the US flag on the moon. Students, this is the picture of Rakesh Sharma. The first Indian to go into space was Rakesh Sharma. He traveled to space in a spacecraft named Soyuz T-11. While he was traveling in space, the Indian Prime Minister talked to him and asked him what India looked like from the space. He described it as Sare Jahan se Acha, means the best in the world. Students, this is the picture of astronaut Kalpana Chawla. The first woman of Indian origin to go into space was Kalpana Chawla under a mission organized by NASA in 1997. She went for her second voyage into space in 2003. Unfortunately, while returning back to the Earth, her space shuttle met with an accident. She, along with 6 other astronauts of the crew, died in the space shuttle Columbia. Students, this is the picture of Sunita Williams. Sunita Williams, the first Indian woman to have gone to space in 2006. So students, that's all for today's class. So today we have completed chapter number 13. If you have any doubt regarding any topic which I taught you today, so you can just call me or you can write in class group also. So students, take care yourselves. Thanks for watching this video.